सो हम आज स्टार्ट करेंगे राइट अ प्रोग्राम टू ऐड अ कॉमन नेमली ऑर्डर्स हैविंग वैल्यूज 6000 6700 6200 and 6000 respectively for the zone ABC and D. The program should be add a new zone E add dummy values in a row solution. In solution important finance SPD /MD get in road cells and cells of different and zone printed self output. So रुकिए 2 मिनट अभी रोशन 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 क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं। ठीक है, तो बैठ जाओ। हाँ रोशन, तुम्हें ABCD आता है? आता है। सब आता है? तो बताओ तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। गुड बॉय। एडिंग रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम दियर। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे एडिटिंग। थोड़ा सा हमें बाहर काम पड़ा तो इसलिए मैं रोशन को मिलने गया था। तो सो हम ये वाला एडिट करेंगे। सो 1 to 1.3 और या आप बोल सकते हैं 2.8 एडिंग अ रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। There is another way of adding rows data frame, especially if in the rows the added part especially if the rows to be added are part of another data frame. This is by using the method data frame appended. This method depend the rows of data frame to the end of the given data frame. For example, consider two data frame mydf1 and mydf2 as a given below. Important pandas SPD mydf PD data frame column. सो अभी हम ये इसको क्विट करके अब हम अगले now if you write a statement as I will simply add all the rows myd2 and return a new data frame. See below mydf df1 appended df mydf df2 और mydf3 ये एडिट करेंगे। सो कॉलम 1 और कॉलम 2 यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा 15 14 13 12 10 11 9 8 7 6 करके आपको एक दिया गया है। सो ये भी और लास्ट का ये भी आप ये सेम ऐसा ही है। सो कॉलम 1 कॉलम 2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 सो ऐसा ही करके ये। सो अब अगला भी हम रीड करेंगे। सो अगला पेज हम टर्न करते हैं। सो यहाँ पर आप एडिंग रोज और डेटा फ्रेम ये आप जानना है तो विथ डिफरेंट कॉलम के साथ। सो इन दी अबव एग्जांपल बोथ and data frames have the same columns names. What if they have different column names? In case pandas will be at the columns with different names of the new different frame will be named values below udif md my mdf data frame. So ये भी एक कॉलम 1 3 ऐसा 19 17 18 16 करके है।
सो यहाँ पर भी सेम ही है। सो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, कॉलम 1 2 3। सो कॉल 1 2 3 करके 15 14 13 यहाँ पर एक नैन 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 नॉन वैल्यू है। सो यहाँ पर 18 16। सो ऐसा है आपको, और ये भी रीड करते हैं द syntax of the pandas appended method is a given below. You can use very integrating if you want to ensure that are the no duplicate index in the final data frame. And data frame is the list data frames. So data parameters other and integrated index data frame or a cells decade like object of cell of this. If true, do not use the index labels very integrated. If true, raise value error or create an index with duplicates. Short columns if the columns of seal and other are not alleged. Return type appended data frame. 113 modify a signal cell. You can use data frame let row or position column position to modify values using for and column position. Refer to MCQ 30 question given in object type question at the end. And this character 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 to change modify signal, use the columns row labels new method values DTI pollution बेंगलोर टू यहाँ पर आप पोल्यूशन एक दिल्ली मुंबई कोलकाता यहाँ पर पॉपुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल स्कूल्स और डेंसिटी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर सी द टाइम ऑफ द सेल ऑफ गॉट मॉडिफाइड। क्रिएटिंग अ न्यू डेटा फ्रेम सेलोस अ रियल कॉपी। सो ये हम रीड करेंगे। सो यहाँ पर अब क्रिएटिंग अप न्यू तो ये हो गया। सो नाउ इफ यू चेंज the value of one cell of the data frame df1 original data frames as it will change the value of the given cell in data frame. But if check the value the new data frame df example dfy now b. So but if you check the value of the new data frame df2 it will be also changed. Example, so why did it happen? Was not df5 supposed to be a different data frame unaffected from the change of df1? The answer of all your questions lies in the syntax of the pandas data frame method. So far you have read the syntax of pandas data frame method is data frame object pandas data frame a 2D data frame structure columns is column sequence index sequence, but there is an additional optional agreement copy which
is by default set false. Example: data frame, object panda data frame, the 2D data structure, columns, column sequence, index, index sequence, copy false. With copy is false, its default value the new data frame is not created as a separated copy, and in this was linked to the original data frame only a new label is created referring the original data frame. How all changes made to in order created a data frame as a completely different unlike data frame. You need to set the copy agreement as true so that a new data frame is created as true copy deeply. Example is df port data frame df1 copy true df1 178 df 0123 011 11 13 df. So deleting rows columns in data frame to delete column. Oh sorry, this is not, this is first. So read. So deleting remaining columns rows and provide to delete to rows and columns statement and drop function pandas is provided renew function to renew rows columns. In this section of shall be talked about rows columns can deleted or renamed. Let us now talk about excuse me. So delete or rename columns and the rows. Delete columns in your data frame. To delete a column, use delete statement as this. फॉर एग्जांपल सो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं. सो ये आप एग्जांपल अच्छे से देखिए और इसको ट्राई कीजिए. सो हम यहाँ पर रीड करते हैं. सो टू डिलीट रोज फ्रॉम द डेटा फ्रेम you can use the drop index sequence of index. Both these commands will delete the rows with index 2468 from database data frame df drop. So range 232 drop df drop 2468 12. You can give access 1 along with index labels, then drop will drop the columns. Example, the following commands will drop the mentioned columns for data frame df. So df drop total cost order id access 1. So एग्जाम्पल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. एग्जाम्पल 37. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल और यहाँ पर है. सो आउटपुट. सो
अब हम यहाँ पर रीड करते हैं. So remaining rows columns. To change the name of any rows columns individually, you can use the rename function of the data frame as per syntax below, where the index argument is the index names rows row level. If you want to rename rows only, then specify only index argument. The columns argument in the argument is for the columns names. If you want to rename only, then specify only column argument for the both index columns argument. Specify the name change directionally containing original name and the new names in from like old name, new name. Specify in place argument as a true if you want to rename the rows columns in the same data frame as speak this argument, then data frame is created with the new index columns names and the original remaining unchanged. So just wait for 2 minutes or 5 minutes. I will come. So just 2 minutes. So I will come. So edit. सो रुकिए 2 मिनट, मैं आ रहा हूँ. आप पहले का लेसन रिवाइज करते रहिए. सो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में.
let us let us practically so हम यहाँ पे सो अब हम यहाँ पर रीड करते हैं सो लेट अस नाउ प्रैक्टिकली सी हाउ रिमेन वर्क्स practical so to change the row levels abcd you can write so role name marks the above will the above statement will show the damage change index but when you display the data frame on top of df after executing above statement it will show you the original data frame see below because by default rename creates a new data frame with changed name roll number 10 marks to make change in the index columns name original data frame you need to specify the additional increment in place truth in the rename example so top of rename सो इंडेक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक एग्जाम्पल की तरह है सो ये हम क्विट करते हैं सो you can use rename to change column names to example following statement will change column name in the top df data frame consider the original top df shows earlier in the beginning of the action you can choose the change selective commas name of the all columns names only the names given the name change dictionary will be get changed for example top of rename so यहाँ पर आप एग्जांपल भी आप देख सकते हैं सो आप ये अच्छे से कीजिए सो अब हम यहाँ पर करते हैं सो you can combine anything argument to index columns play argument following the insert the same so ये भी ऐसा ही तो so example 38 देखते हैं so consider the cell df shown table as shown below यहाँ पर टारगेट और सेल है सो जोन ए बी सी डी करके भी है आप एग्जांपल भी दे सकते हैं सो यहाँ पर ऐसे राइट ऑफ प्रोग्राम रीनेम index of zone C and zone D and central blocks in the respectively and the column even target cells and the targeted and the achievement respectively so ऐसा करते हैं so solution important pandas spd cells df created by loaded here print cell df rename index zone c so central zone exchange so ऐसा करके column targeted cells achieved करके ऐसा करते हैं सो यहाँ पर आउटपुट
ऐसा आएगा। सो आउटपुट आप देख सकते हैं। So example 39 will be previous programs reflect the rename index and columns rename in the data frame. Cell df makes change in the previous programs so that the data frame cell df that change index and the column solution. Solution भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। So the previous programs will not reflect the change index and columns name in the data frame cells df on which rename is applied because in place true agreement is missing. The change program to make change in the cell dfs will be important pandas as pt cells df rated are loaded here. So cell df rename index zone c so central zone d डायरेक्शन और कॉलम करके टारगेटेड सेल्स अचीव्ड इन प्लेस ट्रू। सो यहाँ पर प्रिंट सेल डी एफ करके मोर ऑन डेटा फ्रेम इंडेक्सिंग बुलियन इंडेक्स करके यहाँ पर करने हैं। सो टिल नाउ यू हैव लर्न टू क्रिएट एंड यूज डेटा फ्रेम इन वेराइटी ऑफ वेज। यू हैव ऑल्सो लर्नड to change index columns names, rename them, etc. Let us now talk about interesting features of data frame. Boolean index. Boolean index is the name of such. Meanwhile, Boolean values true or false, 1 or 0. So sometimes as index of data frame, you might be wondering why what is the need for having index as true or false. So यहाँ पर हम थोड़े से वेट करते हैं। सो रुक के मैं 2 मिनट में आपको बता दूंगा। सो आगे का प्रोसेस आगे का स्टेप में। सो रुक के 2 मिनट। अभी के लिए। सो रुक के 2 मिनट। मैं अभी 2 और 5 मिनट में आऊँगा। सो आप रिवीजन करते जाइए। ये पिछले का आप रिवीजन ये भी आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। सो मैं आऊँगा। सो 2-5 मिनट में रुकिए।
So well, your question is genuine, and so in the answer actual in in some situation we may need to divide our data into a two subset, true or false. Example, your school has decided to launch online classes for you, but some days of this week are designed for it, so data frame related to this information might look like. So आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल करके ट्रू ऐसा ट्रू फॉल्स से भी एक साथ बोलन जैसा लग रहा है. सो डे डे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे करके एक ऐसा है. सो आप ऐसा भी कर सकते हैं. सो अभी इसका थोड़ा सा एडिट करेंगे. सो दी बोलेन द बोलेन है वेल योर सो यहाँ पर सो डेटा इनटू सबसेट. सो आप ये तो हो गया. सो हम यहाँ पे एडिट कर रहे थे. सो द boolean index divide the data frame into groups, true rows, false rows. This is useful division situation where you find out things like on which days accession rows from data frame with boolean index. Boolean index is very useful or filtering record. Example for the finding exactly the true or false index rows. You can filter out record for data frame with boolean index using the loc attribute deployed below to display record with true index. To display our record with index as a 0 1 or 0 as 0 only. Class either look true or Monday Wednesday and Friday classes. The क्लास ऑफ द लॉकअप. सो आप यहाँ पर भी एक एग्जांपल जैसा आप देख सकते हैं. सो अभी के लिए हम ये क्विट करते हैं. सो पेन हमारा ये लास्ट लग रहा है. सो नेक्स्ट पेन हम यूज करेंगे. सो not only just a boolean index, you can also select data frame using boolean condition of the example result boolean values true or values as a so data frame. So for example days Monday Wednesday classes आप ये भी आप देख सकते हैं. सो यहाँ पर है with this we have come to the end this chapter. Let us quickly end the have learned in this chapter. So next page turn करेंगे. So next page में let us हम specify करेंगे. So Pandas is the most popular library. Is the specific about the echo and data and the analyze. So और सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट पैंडास. ये तो आप ये भी शायद एसेसरी तो नहीं है सर. ये आप देखिए इसको अच्छे से. हम आपको अच्छे से जूम करके दिखा रहे हैं. सो आप इसको अच्छे से एक बार रीड कर सकते हैं. सो हम दूसरे में हम जाने वाले हैं. सो रुकिए. सो 2 मिनट. सो हम यहाँ पर
सॉल्व प्रॉब्लम सो यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सो पांडाजिता सो आप ये तो छोड़ दीजिए, ये भी शायद ये भी सॉरी मिस्टेक होगा, ये भी नहीं है। हम दूसरा ट्रॉन पेश करेंगे। सो यहाँ पर भी ऐसा ही बेस करके सो रुकिए। सो हम यहाँ पर आज ये एग्जांपल देखेंगे। सो नेम एज जी एज ही शायद ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। सो ये एक यहाँ पर दिया भी गया है, ये कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे किया गया है। सो आप ये भी देख सकते हैं। सही है सारा इम्पोर्टेंट इसका नोट। सो यहाँ पर आप हम रीड करेंगे। सो पेड 15 सो प्रिंट predict the output flow in code it use above given dictionary my so condition the same dictionary. So previous question what will be we output of produce flow in code. So using the df created in question 16 so answer the output of question 17 to 21 given below. So assume the required libraries pandas and numpy are important and data frame df has been created for per question 15 and 16 above. Predict the output of flowing code fragment print so wait so print d to df to team wait. So assume the required libraries panda and numpy are imported data frame df has been created printed and output of the code fragment so df iq 13015 so ये भी आप ये भी देख सकते हैं। So assume the required libraries pandas and the numpy are imported as the data frame has been created per question as 16 above. Predicts output produce and the flowing code fragment ये भी आप देख सकते हैं। सो आप ये भी देखिए। सो हम दूसरे में जाएंगे। सो यहाँ पर भी एक ऐसा ही है। सो assume the required libraries panda and the numpy are the important data frame d2 has been created as per question 15 and 16 predict the output product flowing code fragment print ये भी एक आप देख सकते हैं। ये भी आप अच्छे से देखिए, ये भी सेम ही है यहाँ से। सो यहाँ पर एक टेबल जैसा एक है। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं। सो ऐसा करके सो ये भी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। सो आप देखिए फिर भी सो देखिए ये कैसे कैसे करते हैं। सो हम नेक्स्ट रन करेंगे। सो नेक्स्ट में है। सो नेक्स्ट पे है राइट द यूज ऑफ द रीनेम मैपर और declared the access method of the pandas and data frame mapper and columns method are used together in a rename method. Find the error the following code suggests the solution. So आप ये भी एक देख सकते हैं। ये भी एक आउटपुट जैसा ही आउटपुट ही आप देख सकते हैं। सो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही पिछला वाला ही है। सो हम रन करेंगे दूसरे में। सो हम यहाँ पर आप इसको देखेंगे। सो एग्जांपल 13 सो कंसिडर द data frame mks1 given the reference the 2.2 program calculate minimum repleted to value each section and solution.
solution. So important pandas SPD important and the MP Soki MP and given the MX created loaded the print mode value for each section. So print. So let us the analyze above output and the contents some name and values. The mode of data frame MKS1 the return two values of section C. So 92 and 94 and one value each for a section A 94, B 94 and D 99. Now carefully have a look at given data frame MKS1 reference the look section and the are two values which are repeated a maximum number of times twice out of 5 92 and 99 and the hence both qualify to become mode of the section C but for section A and B are there exactly one value for mode. So pandas will display two values for section C in two rows, and since other sections do not have second mode value, it will be filled the with nan, hence their result is above. So आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. So consider the data frame and reference the write the program of the calculate mode maximum repeated and value for each subject. So आप यहाँ पे solution करके आप यहाँ पर देख सकते हैं. So solution is SPD and the NOP as the MP. So आप यहाँ पे आप देख सकते हैं. So mode value is subjected print and the mode as access. So आप यहाँ पर भी इसको कंप्लीट हो गया. सो ये भी हम अब दूसरे पेज में जाएंगे. सो आज के लिए इतना ही. सॉरी मिस्टेक हो गया. सो अभी के लिए इतना ही. सो नेक्स्ट पेज में हम जाएंगे. सो रुकिए 1 मिनट. सॉल्यूशन. सो ये एडिट करते हैं. सो इसमें क्या है. सो इसमें लिखा हुआ है. सो ये एडिट करते हैं. सो द प्रॉब्लम विथ द अबव कोड इज when agreement header none is used in a read CSV, then data frame is given one column number which are 1 2 0 1 or 2 or thus the second column is now identify as CDF and not as CDF point is used in the code. So if we change the last line of the code as follows, then program will run and give the output as shown below. Print maximum point are out with correct mode will be SATA 4500 ऐसा करके आउटपुट आपका आएगा ऐसा ही. सो इसको क्विट करते हैं. सो यहाँ पर 421 में रीड करेंगे. सो ये वाला. सो रीड इन specify number of rows from CSV file. So CSV file ये वाला एडिट कर सके. सो गिवन एग्रीमेंट एंड रोज रीड इन CSV फाइल. सो स्पेसिफाई रोज शायद ये भी. सो ये भी कुछ करते. सो यहाँ पर इसका नीचे
आउटपुट भी ऐसा ही आपको मिलेगा। सो आउटपुट को भी क्विट करते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, सो ये एडिट करेंगे। सो यूजिंग एन रोज एग्रीमेंट you cannot extract top rows, bottom rows and middle rows too if you use with head or tail function as our following example is doing। सो यहाँ पर ऐसा है। सो एग्जाम्पल नंबर 6 को देखेंगे। सो कंसिडर द एम्प्लॉय CSV फाइल यूज इन एग्जाम्पल 1। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द record from this file in data frame and print the middle row stored in the CSV file। So solution, we shall load the top 3 rows in data frame as there are only 5 rows in data frames, and then display the bottom row from the data frame, which will be the middle rows we require important। ये भी शायद ऐसा ही होगा। ये भी इसको भी मतलब इसको भी क्विट करेंगे। तो अभी के लिए इसका भी हम छोड़ देंगे। सो हम यहाँ पर अगले पेज में जाएंगे। सो ये वाला रीड करेंगे 4.2(1)D। सो reading from CSV files having separator different from common। So some CSV files are secreted that their separator character is different from common, such as a semicolon or pipe symbol, etc. To read data from such CSV files, you need to specify an additional argument as SP separator character. If you speak this argument, then default separator character commas is considered from example. Flowing command will read data from a CSV file where data has been separated using semicolons। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा होता है। सो अच्छे से देखिए इसको और आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। सो अब एग्जांपल 7 हम रीड करेंगे। सो यहाँ पर है रीड अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम support CSV file shown below where the separator is tab character। solution important panda SPD st ये भी आप छोड़ दीजिए, ये भी कुछ ज़रूरी नहीं। इसका आउटपुट यहाँ पर है। सो ये भी छोड़ दिए, हम ये एडिट करेंगे। सो इसका मतलब हम तो यहाँ हम जानेंगे। सो यहाँ पर है यू मे यूज अ डेटा फ्रेम read through a CSV file in a way as required from your data analysis from data visualization purpose। Following example, load the data from export CSV file and plots in online craft. For this, make a sure to import pilot and liver and use sound function in your program। सो एग्जाम्पल 8। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो राइट अ प्रोग्राम टू रीड फ्रॉम
support CSV and plot to computation and column against support column in from a line chart solution important पार्ट है PD आप ये देख सकते हैं। सो ये भी कुछ ज़रूरी तो नहीं है। सो ये इसको छोड़ेंगे। सो हम अगले पेज पर रीड करेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं। सो यहाँ पर है 4.22। सो यहाँ पर स्टोरिंग डेटा फ्रेम डेटा टू CSV फाइल। सो आप यहाँ पर है sometimes we have a data available in data frame and we want to say that data in CSV file for this purpose Python pandas provide two CSV function that saves the data and data frame in a CSV file। सो यहाँ पर आप फंक्शन ऐसा देख सकते हैं। सो इसका आउटपुट ये है। सो ऐसा होता है इसका आउटपुट। सो ये भी हम क्विट करेंगे। सो आउटपुट को क्विट करके हम यहाँ पर एज नो स्पेटर हैज बीन मेंशन it will be take default spatter character commas separate data in the CSV file. Also, even if their exit file with the same name at the given location, it will be simply overwrite the file without any warning. Now you can check at the given path and you will find a file with a new CSV there. Open the file and you will be the find data of data frame df7 there, spread. Let us save the same data frame data in the another file, namely but the spreader is character by giving the following command। सो आप ये भी देख सकते हैं। सो ऐसा है। सो अब हम अगली पेज पे जाएंगे। सो ये भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर है। सो आउटपुट ऐसा होता है, ऐसा निकलेगा आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है, ऐसा आपका आउटपुट मिलेगा। सो यहाँ पर भी एक अच्छे से दिया गया है। सो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। सो ये आप देख सकते हैं। सो सॉल्यूशन हम इसका ये है। सो सॉल्यूशन भी आप देखिए। सो कॉल ये सारा ये भी आउटपुट है। सो एग्जाम्पल 10 में भी थोड़ा ऐसा करके दिया है। सो एग्जाम्पल 10 दूसरा सेम लग रहा है। सो देखते हैं ये भी। सो ये तो कर नहीं है। तो दूसरा हम यहाँ पर स्किप एंड रो ये देखेंगे। सो इसके ये पूरा एडिट करने से पहले रुकिए 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं। सो रुकिए मैं 2 मिनट में आऊँगा। सो आप ये सारा एक बार एडिट कर सकते हैं अपने आप से। सो आप एडिट कीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ और इसका आपको बाद में समझाऊँगा। सो रुकिए। देखा
सॉरी मैं तो 2 मिनट बाहर गया था क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था, तो लेकिन वो काम हो गया। सो आप आपने शायद ये सारा एडिट कर दिया होगा। सो यहाँ पर है skip row and column. So column name in CSV file. So there are many agreement in the CSV function out which two agreement header index are by default true, which signify that by default. Example, when you skip the agreement in CSV functions, the column header and rows label index, the data frame will be written in this CSV file. So header agreement false, so ये ऐसा है। सो ये आप समझ गए होंगे। सो दूसरा में भी सिमिलर है, यहाँ पर सिमिलर टू स्क्रिप्ट रो इंडेक्स while writing a data frame in CSV file, you can sell the value index agreement to false. सो ये भी आप समझ गए होंगे। सो यहाँ पर है फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी skip both the column header as well as the row labels in the CSV file. सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं example 11, write a program to write the following data frame STF in a CSV file, namely as data CSV, but there will write and row heading labels solution. सो आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं solution, यहाँ पर भी ये आउटपुट। सो handling name values with to CSV. So sometimes you data frame has some missing values. For intention, execute following bin so statement to having missing values in your data frame. You must have imported numpy library as mp prior to execute following statement. So ये भी आपको समझ में आया। सो ये भी इसके बाद हम यहाँ पर है सो आप ये भी आप देख सकते हैं ऐसा होता है आउटपुट। सो ये भी आप देखिए। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम रीड करेंगे। सो नाउ इफ यू स्टोर दिस डेटा फ्रेम इन CSV फाइल by giving following command, by default the missing name values are stored empty string CSV file. The CSV file look like shown in the right. You can specify your own string that you can be written for missing name values by giving an agreement. A new string of following statement will be null in place name values the CSV फाइल। सो यहाँ भी आप देख सकते हैं। सो ऐसा होता है आउटपुट। यहाँ भी एक आउटपुट है। सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल 12 ये भी हम रीड करेंगे। सो यहाँ पर भी यहाँ पर भी ये थोड़ा सा लिखा हुआ है। सो ये भी इसको रीड करके समझेंगे। सो those we can summarize to CSV as flows where SAP and NAN RIP agreement are optional. सो ये ऐसा होता है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल 12 देखते हैं। सो एग्जाम्पल 12 पे है previous example 9 and 10 created CSV file without NAN। सॉरी रुकिए 2 मिनट, फोकस खो गया था। सो यहाँ पर है with a NAN values write a program to store data all df and data frame app CSV file along with NAN values stored as null and subter as। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसा है। सो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है। सो सॉल्यूशन में आप यहाँ लिखा हुआ है। सो आप ये भी
आपको मालूम होगा। सो यहाँ पर क्या क्या करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये सब दिया गया है। सो यहाँ पर भी वही है सेम। सो इसका ये आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। सो ऑल इन एफ फाइल। सो यहाँ पर नेम प्रोडक्ट टारगेट ऐसा करके दिया गया है। सो आप यहाँ पर जोन ए और ये जोन ए ऐसा करके आता है। सो ये आउटपुट है। सो आप देख सकते हैं। सो इसका आउटपुट जैसा ही। सो आप यहाँ देख सकते हैं कैसा कैसा होता है। सारे या ये आउटपुट हो गए तो होता था। सो आप देख सकते हैं। सो ये इतना ही था। सो ये आउटपुट आप अच्छे से समझिए। सो इसको समझने से आपका ये आसान होगा। सो आपको समझ में आएगा इसको समझने से। सो आप आज के लिए इतना ही। आप सभी अच्छे से इस सभी को याद करिए और अच्छे से इसका वर्क कीजिए। मतलब जो भी है एग्जाम्पल या जो भी है आप एक एग्जाम्पल कॉपी में लेकर आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।